Okay. So good morning, students. In the last lecture, we have already done this lesson, the freedom struggle of 1857. What we are going to do today is we are going to revise or have a quick recap, okay, of this lesson. This lesson appears on your history textbook on page number 15, the freedom struggle of 1857. Okay, so in the last lesson, third lesson, previous lesson, we learned about the effects of British rule. Okay, so British had a dual government system, then how they commercialized the agriculture. Commercialization of agriculture is when British started giving more encouragement to cash crops like cotton, indigo, tobacco, tea. Okay, these are called as cash crops because they are sold in the market for cash, just for business purpose, for profit making. So they needed indigo for color. Indigo is क्या बोलते हैं, नीला रंग होता है जो. So they started growing, forcing the farmers to grow indigo, to grow cotton, क्योंकि वहां पर इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, मशीनरीज को इन्वेंट किया था, तब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हो गए थे, तो उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो हमारे इंडियन फार्मर्स को दे वर फोर्स्ड टू ग्रो कॉटन, इंडिगो, टी, टोबैको, सच थिंग्स. So this is called as commercialization of agriculture. Where agriculture, you should be growing food grains, correct, for the humanity, so that we can survive on food grains. But here they were forced to grow the cash crops. Also, then there were social and cultural effects of the British rule in India. We are talking that how the freedom struggle began. So first thing we will see is what were the causes. Okay, different causes for the struggle. Why did the struggle for this thing, struggle of freedom, started in 1857? Okay, so this 1857 freedom struggle or revolution of 1857 is called as freedom struggle. First freedom struggle बोला जा सकता है इसको. क्यों ऐसे कहते हैं, क्या कारण है? तो बिफोर ब्रिटिश रूल, प्री ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश रूल होने से पहले बहुत सारे किंगडम्स थे, छोटे छोटे राजा लोग थे, करेक्ट, और विलेज सिस्टम था. हर विलेज सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट था, मतलब they were growing their own food grains, they had their own artisans, there were potters, there were weavers, there were blacksmiths, and it was a self sufficient unit. विलेज क्या था, सेल्फ सफिशिएंट था, आत्मनिर्भर जैसे चलते, आपस में उनको जो चाहिए वो आपस में अपने नीड्स हर विलेज सॉल्व करता था. बट मोमेंट ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर, दे केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स. हमने देखा था पिछले लेसन में, बिजनेस करने आए, ट्रेडिंग करने आए, और बाद में ये लोग ने राजा से, बंगाल के राजा से राइट्स लिए उन्होंने कि हम लोग को फैक्ट्री डालनी है यहाँ पर सामान की, और धीरे धीरे करके यहाँ पर वो लोग रूल एस्टैब्लिश कर दिया उन्होंने. ठीक है, तो अब विलेज सिस्टम का नेचर कैसे बदल गया, कैसे इनसिक्योरिटी आ गई, क्या कॉजेस थे? तो सबसे पहले कॉज इकोनॉमिक कॉज था, आर्थिक, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू सर्वाइवल, ओके, इन द टर्म्स ऑफ फूड. हाउ इट हैपेंड, करेक्ट, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन, लोग इस स्ट्रगल के लिए क्यों बढ़ के और क्यों लड़े, करेक्ट. तो द फर्स्ट इज द इकोनॉमिक कॉज. ओके, सो या, हु इज रीडिंग, लेट मी सी हु हैज रेज्ड द हैंड फॉर रीडिंग. यस, so I will unmute. One second. Fiza, I'm unmuting you. So you read now from economic causes. I have unmuted you, Fiza. Zoya. Yes. Unmute yourself now. Yes, teacher. Will you read?
Which paragraph, teacher? Economic causes on page number 16. Okay, teacher. Yes. The British introduced new revenue system to increase their income. Taxes were forcibly extracted from the farmer. As a result of it, the agriculture system collapsed. To sell the British good in India and enjoy profit was the policy of the British. They imposed heavy taxes on the local industry. The handicraft and textile industry of India were ruined. Many Indian artisans became unemployed. They had growing discontent in their mind against the British. Hold on. So what was the economic cause? First thing, they started a new revenue system. Okay. What happened to increase their income? Whose income? British's income. Okay. So what did they do? Once they became the rulers in the village, they started new revenue system. Now, what was this revenue system? We have learned it in the previous chapter. The farmers had to pay all the tax they are supposed to pay in cash and on time. Okay, so what happened? They were forced to pay the taxes because earlier how it used to happen previously, अगर क्रॉप्स अच्छे से उगे नहीं, कभी बारिश नहीं हुई या कुछ और कैलामिटी आ गई और क्रॉप्स उगे नहीं, तो क्या होता था? राजा जो होता था वहां का, तो उनको टैक्स जो है लगान, यू मस्ट हैव सीन मूवी लगान, राइट? आमिर खान मूवी. सो इट इज बेस्ड ऑन दिस टैक्सेस ओनली. सो वहां वो उनको माफ कर दिया जाता था उस साल के लिए लगान. बट ब्रिटिश वुड नॉट एक्सेप्ट दिस. दे सेड दैट यू हैव टू पे द टैक्स एंड यू हैव टू पे इन कैश, not in crops or in kind, and it will be paid on time. And it was forcibly taken. So because of this, what happened? Farmers were in debt, DEBT, कर्जे में चले गए farmers, and agricultural system collapsed. So farmers were very sad. Now, to sell their goods to British goods in India and enjoy the profit of the policy of the British, they impose heavy taxes on local industries. तो जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते थे, कारखानों में, इंडिया में, उनके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दिया. तो अगर बहुत सारा टैक्स, यस विनय, यस टीचर, नहीं, कीप बी ऑन म्यूट. ओके. सो बहुत सारा टैक्स लगा दिया इंडियन सामान पे, ठीक है? तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगी और खुद वो लोग ब्रिटिश गुड्स को इंडिया में बेचने लगे. तो इसकी वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो रुइंड हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि यहाँ के आर्टिसंस को प्रॉफिट ही नहीं होता था, बेच ही नहीं पाते थे, और दे कुड नॉट compete with the machine made products coming from England. Correct? They were producing on machine, and our artisans were producing by hand, so it would take more time and would take more cost. Correct? Handicraft industry and textile industry. So like this, all the artisans, जब इंडस्ट्री बंद हो गई तो सारे कामगार जो हैं बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए, बेकार हो गए, और इसलिए ब्रिटिश के खिलाफ उनके मन में जो है बहुत ही अनहैप्पीनेस था कि ब्रिटिश ने आके ऐसे टैक्सेस लगा दिए हैं तो हम बिल्कुल ही कमा नहीं पा रहे, उनका रोजगार चला गया. ओके, सो दिस इज फर्स्ट इकोनॉमिक रीजन, मॉनिटरी रीजन, पैसों का रीजन, कि उनका रोजगार छिन गया. फार्मर्स वर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम. आर्टिसंस एंड द पीपल वर्किंग, वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे वो लोग, आर्टिसंस जो है, बिकॉज ऑफ द हैवी टैक्सेस दे वर अनएम्प्लॉयड. ओके, नाउ व्हाट आर द सोशल कॉजेस? क्या हुआ सोशल कॉज में? समाज में जो लोग रह रहे थे उन्हें क्या प्रॉब्लम हो गया इनसे? ओके, तो आई एम अनम्यूटिंग, वन सेकेंड, शमिष्ठा नाउ. शमिष्ठा, so you can unmute yourself now and read. Yes. Social causes. Yes, teacher. Social cause. The Indians felt the British were interfering in the culture, tradition, and custom of India. Sati prohibition, widow, remarriage, etc. were correct from social point of view. But the Indians thought that it is an interference in their lifestyle, and hence they were dissatisfied. Dissatisfied. Okay, just wait there. So social cause क्या था समाज में?
तो समाज में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, पहले तो सती सिस्टम बंद करवाया, करेक्ट। विडो रीमैरिज को उन्होंने अलाउ किया कि दे कैन विडो, अगर किसी का पति गुजर गया है तो वो वापस शादी कर सकते। तो ये सब बातें जो है इंडियंस को लगा कि ये हमारी जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं, व्हाई आर द ब्रिटिशर्स इंटरफियरिंग विद आवर रिलीजन एंड आवर लाइफस्टाइल, and so they were unhappy, dissatisfied with the British. This was the social cause. Okay, now we talk about the political reasons why Indians were, or what was the cause of this discontent among the people. Political causes. Read, Samishta. After 1757, the British took charge of many Indian states. Later, Lord Dalhousie annexed many princely states on various cases. The princely state on various cases, the Nawab of Ayodhya was dethroned on grounds of maladministration. Various the princely state of Satra, Nagpur, and Jhansi were excellent thought the doctrine of slaves. Due to the policy of Dalhousie, and Indians did not consider the British as trustworthy. Okay, so what was the political reason? So after 1857, British took charge of many Indian states. I said there were small states and there were small kings. Okay, kings who were ruling the small states. Okay, and what happened is British took over these states from them forcibly. Like Lord Dalhousie annexed many princely states. कई राजा जो थे उनके राज्य लॉर्ड डलहौजी ने छीन लिए. नवाब ऑफ अयोध्या वाज dethroned. Dethrone मतलब राज्य से जो उनके सिंहासन से उनको उठा दिया कि फॉर माल एडमिनिस्ट्रेशन. माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब तुम्हें राज्य चलाने नहीं आता, you don't know how to do administration of the kingdom. And princely states of Satara, Nagpur and Jhansi. You all know story of Jhansi ki Rani, Lakshmi Bai. So her kingdom was taken away, her Jhansi was taken away, saying that there is no legal heir. उनका कोई वारिस नहीं है, तो इसके लिए उनकी देखभाल कौन करेगा करके ब्रिटिश ने वो राज्य छीन लिए. It is called as annexed, take away forcibly. तो जब झांसी की रानी ने कहा था ना, मेरी झांसी नहीं दूंगी, राइट. सो सतारा, नागपुर, झांसी, अयोध्या, ऐसे छोटे छोटे जो राज्य थे वो लॉर्ड डलहौजी ने पॉलिसीज बनाए और इंडियन से छीन लिए. इसके लिए जो पॉलिटिकल वातावरण था वो भी बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन वाला था, डिसकंटेंट वाला था. नेक्स्ट रीजन वाज डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स. तो अब इंडियन सोल्जर्स जो थे वहां पर काम कर रहे थे आर्मी में, उनको ब्रिटिश सोल्जर से नीचे वाला स्टेटस दिया गया था, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती थी. ठीक है, दे कुड नॉट गेन एनी हायर पोस्ट देन द सूबेदार. सारे इंडियंस कितने भी होशियार हो, कितने भी बहादुर हो आर्मी में, उन्हें सिर्फ सूबेदार तक की पोस्ट दी जाती थी. एंड ऑल द हायर पोस्ट पोजीशंस were given to the Britishers. This was first injustice done to the soldiers, Indian soldiers. Second injustice done to them was they were paid less salary, less amount than the Britishers. Third was the allowances which were given to them were slowly decreased. So because of this reason, the soldiers, Indian soldiers who were working over there at that time in the army were dissatisfied, were unhappy. So what are we doing? We are learning the causes of India's freedom struggle of 1857. So we saw the first cause, economic cause, how the farmers and the artisans, कामगार और किसान क्यों दुखी थे. Second, we saw about the discontent in the political areas. Second, we saw the social सोसाइटी में जो आम आदमी थे उनको लग रहा था कि हमारी जिंदगी में, हमारे धर्म से, हमारा जो लाइफस्टाइल है, सती सिस्टम है और ये सब में वो लोग क्यों इंटरफियर कर रहे हैं. करेक्ट, बिकॉज ऑफ द सती सिस्टम एंड प्रोहिबिशन means to stop, and widow remarriage. Third cause was the political cause, how the kings and the princes were unhappy because their kingdoms were annexed, taken away by force by Lord Dalhousie. Next is the discontent in the Indian soldiers.
who were in the army. Now, what is the immediate cost? Listen carefully, children. In 1856, the British provided long Enfield rifles to Indian sepoys. The sepoys were required to bite the end of the cartridges. तो एक एनफील्ड राइफल, एनफील्ड नाम की राइफल प्रोवाइड की गई आर्मी के सोल्जर्स को. अब कहा जाता है कि उसमें जो कारतूस भरने थे, कार्ट्रिज भरने थे, उसको मुंह से you have to remove it from your mouth, the covering of it, डाल यूज करने से पहले. Now this cartridge was made up of the fats of cows and pigs, ऐसे बोला गया. Now due to this, कि this cartridges were covered. अब ये news was spread कि ये जो cartridge है ये cow और pig के fat से cover है. So this was against the religious sentiments of Hindus. Cow is very sacred for Hindus. We worship, and for Muslims, they do not have regards for pig. So their sentiments were hurt, these soldiers, and they were unhappy. Okay, so this was the main cause. Because कैसे main cause हुआ? It was said that those sepoys, those people in the army, armed men who refused to use these cartridges were given severe punishment. कि किसी ने कहा कि मैं ये cartridge use नहीं करूंगा तो उसे बहुत punishment दी जाती थी. तो मंगल पांडे, please pay attention children, मंगल पांडे from Barakpur cantonment shot an English officer as a reaction to the unjust nature of the British officers. He just shot one of the English officer. So when he shot the English officer, he was arrested and hanged to death. Now this news spread as a fire. Full regiment of Indian soldiers, Indian sipais at Meerut took part in the India's freedom struggle, and they started marching towards Delhi. And thousands of Indians, voluntarily, means with their free will, started joining this freedom struggle. Correct? And this leadership was given to the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. Okay, so we have already done this chapter. This is just, we are coming, just having a recap of what were the causes of India's freedom struggle of 1857. Now quickly, let us come to the economic consequences. Okay, what were the consequences? What were the causes we have seen? Now let us see, what did the British do? British tried to crush this struggle, okay, to suppress this struggle. So we next chapter we are going to see what were the consequences of this, what were the causes of the failure. The whole of them, the farmers, the artisans, the princes, and even the common man came together. Okay, now you can see where the freedom struggle spread in all these parts in 1857. So why didn't we get the freedom in 1857? Correct? Because the British crushed down this struggle by all means. Their rule had become very vast by this time. And they made a quick recovery, and within 6 months, whatever territories they had lost were taken away. And Rani Lakshmi Bai, Kunwar Singh, Ahmadullah, all of them, such great leaders, they lost their lives over there. Bahadur Shah Zafar, who was taking the leadership of this India's freedom struggle, was arrested. He was imprisoned. Tatya Tope fought for 10 months with the British rule. But again, there was some betrayal, some cheating done, and he was hanged to death. So this was this revolution, ये जो क्रांति हुई 1857 में, this was crushed by the British rule. Though हालांकि peasants, farmers, artisans, common man, सारे tribes के लोग, princely kings, Hindus, Muslims, all came together, and their common aim was to throw British away from India. But still this was a failure. तो ये क्यों फेल हो गई, इसके कारण देखते हम कि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 में हुई वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई. तो फर्स्ट थिंग, इट डिड नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल ओवर इंडिया. इसकी इंटेंसिटी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा थी, लेकिन राजपूताना, पंजाब, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया. ठीक है. सेकेंड था, देयर वाज नो सेंट्रल लीडरशिप. लोग आ तो गए बाहर ब्रिटिश से लड़ने, लेकिन क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
कौन लीडर है, कौन आगे का आदेश देगा, किसी को कुछ मालूम नहीं था। करेक्ट, सो देयर वाज नो सेंट्रल लीडरशिप, देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी। जबकि ब्रिटिश के पास पूरी आर्मी थी, पूरा स्ट्रेटेजी था, प्लान थे वो लोग कि कैसे इस लड़ाई को, इस फ्रीडम स्ट्रगल को बंद करना। ठीक है, फिर कितने प्रिंसेस थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, जैसे मैंने कहा छोटे छोटे प्रिंसेस थे, किंग्स थे, उन्होंने इसमें पार्ट नहीं लिया, वो लोग ब्रिटिश को ही सपोर्ट करते रहे। ऑल्सो देयर वाज नो मिलिट्री टैक्टिस। करेक्ट, इंडियन सोल्जर्स ब्रेव तो थे, लेकिन उन्होंने कोई टेक्निक नहीं यूज करी। दे कैप्चर्ड दिल्ली और उन्होंने बहादुर शाह जफर को बिठाया सिंहासन पे, बट देयर वर अदर थिंग्स, यू नो, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड आर्म सप्लाई दे कुड नॉट फाइट अहेड। ब्रिटिश के पास क्या था, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ थी, पैसा था, डिसिप्लिन्ड आर्मी थी उनकी, उनके पास स्टॉक ऑफ आर्म्स थे, हथियार थे, हमारे पास वो नहीं थे। उनके पास एक्सपीरियंस जर्नल्स थे, जनरल्स, लीडर्स थे, जो हमारे पास नहीं थे। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी ब्रिटिश के अंडर में था, तो उनकी जो मूवमेंट्स थी वो स्विफ्ट थी। लेकिन इंडियन सिपाहीज हम लोग जो है सक्सीड नहीं कर पाए। हालांकि हम ब्रेव थे, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स और बाकी जो सामग्री थी वो नहीं थी। सो दीज वर द कॉजेज ऑफ फेलियर। लेट मी रिपीट द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1857. First thing, the struggle was not comprehensive. Comprehensive is spread all over. It was only prominent in some parts of North India, but not in most of the parts of Rajputana, Punjab and other parts. Similarly, there was no central leadership. Okay. Third thing was most of the federal princes remained aloof. They did not join the freedom struggle. Some were loyal only to the British. Okay, then there was no military tactics. Indian soldiers were brave, but they did not have latest what you call arms and weapons and ammunition. There was no transport and communication was with the British. We did not have any experience. We did not have disciplined army. Okay, though we were brave, there was no communication over there properly and no central leadership, and we did not have a proper strategy, a planning. Okay, so these were the conditions or reasons or causes for failure of 1857. Let us now see what were the consequences and complete it. Yes. So Musabbar, please raise your hand so that I will unmute you and you can read the consequences. What were the results? Consequence means kya? Listen properly. Consequence of freedom struggle of India means what were the reasons or results, not reasons, results of India's freedom स्ट्रगल ऑफ 1857 के रिजल्ट्स क्या हुए, परिणाम क्या हुआ। तो मुजफ्फर, विल यू रेज योर हैंड सो दैट आई कैन, या सो 1 second, others please. So see if I have unmuted you. Yes. Okay, are you unmuted? Just be there. Yeah, please read from consequences. Which page number? This is page number 19 of your textbook, right hand side. You can see on the screen also consequences of freedom struggle and of British rule and of rule of East India Company. Due to the company rule, there was growing dissatisfaction among the Indians, and the British rule had to face the struggle of 1857. It forced the British Parliament to end the rule of the company and instead take over the responsibility of ruling over the people of India through the Government of India Act 1858. The Governor General was now designated and the Viceroy of India, Lord Canning, happened to be the last Governor of General and the first Viceroy of India. A new post called Secretary of State was created in the British government to look after the affairs of India. Okay, the very first consequence is the effect of India's freedom struggle. What that East India Company, which was ruling India, now the rule of East India Company came to an end. And what happened is
British Parliament took over the rule in the responsibility of ruling the country of India. करेक्ट. तो अभी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल चला रही थी, अब वो ईस्ट इंडिया का रूल खत्म हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रूल जो है अपने हाथ में ले लिया. और लॉर्ड कैनिंग को, प्लीज अंडरलाइन एंड रिमेंबर दिस, लॉर्ड कैनिंग को वाइसरॉय ऑफ इंडिया डेजिग्नेट किया गया. करेक्ट. डेजिग्नेट किया गया मींस अपॉइंट किया गया, उसे ये पोजीशन दी गई. ठीक है. सो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया was and governor general, last governor general was Lord Canning. Okay, so एक न्यू पोस्ट क्रिएट की गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, करेक्ट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और दे स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर इंडियाज अफेयर्स. सेकंड इफेक्ट क्या हुआ, लेट मी टेल यू. क्वींस प्रोक्लेमेशन. तो क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड डिक्लेयर्ड इशूड अ डिक्लेरेशन. उन्होंने इंडियंस को क्या कहा, उन्होंने इंडियंस को कहा कि हम आप पर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, रेस, रिलीजन, कास्ट या बर्थ पे. गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो मेरिट पे दी जाएंगी, MERIT. मेरिट इज योर ओन परफॉर्मेंस, योर क्वालिटीज, करेक्ट, हाउ यू आर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या बिकॉज ऑफ ब्रिटिश है तो आपको हायर पोस्ट मिलेगी, ऐसे नहीं. देयर विल नो इंटरफियरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स. क्वींस प्रोक्लेमेशन ने कहा कि हम आपके धार्मिक मामलों में कोई इंटरफियर नहीं करेंगे. इट वाज आल्सो मेड क्लियर दैट द ब्रिटिश क्राउन, मतलब कि क्वीन और किंग जो वहां पर थे, दे विल ऑनर ऑल द ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स मेड बाय द कंपनी विद द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, एंड नो प्रिंसली स्टेट विल बी अनेक्स्ड henceforth. henceforth मीन आज के बाद हम कोई भी राज्य आपका, हम कोई राजा से राज नहीं छीनेंगे. ऐसे क्वीन ने प्रोक्लेमेशन दिया, अपना डिक्लेरेशन दिया. कब दिया ये? 1857 के बाद, इस जो फ्रीडम स्ट्रगल के बाद. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट ये हुआ कि जो आर्मी का कॉम्पोजिशन था, ब्रिटिश सोल्जर्स की नंबर जो है इंडियन आर्मी में बढ़ा दी गई. इंग्लिश ऑफिसर्स को मेन पोजीशंस दी गई. आर्टिलरी जो है, बिल्कुल आर्टिलरी जो था वो पूरा का पूरा ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले लिया. और देयर वाज अ डिवीजन ऑफ मिलिट्री ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. प्रॉपर केयर दिया गया कि इंडियंस यूनाइट ना हो सके और वापस फिर से ऐसी कोई क्रांति, कोई रिबेल ना कर सके. इस तरह से ब्रिटिशर्स जो है अलर्ट हो गए कि अगर इंडियंस पे हम ज्यादा ऐसे इनजस्टिस करते हैं तो दे विल यूनाइट टुगेदर एंड अगेन दे मे बिकम यूनाइटेड, और वापस ऐसे कोई क्रांति, कोई ऐसे रेबिलियन या ऐसे कोई रेवोल्यूशन, वो लोग फ्रीडम स्ट्रगल वापस ऐसे कोई शुरू ना कर दें. इसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी. रिलीजियस और सोशल अफेयर्स में इंटरफियर करना टोटल बंद कर दिया. दे स्टार्टेड टेकिंग केयर दैट इंडियन सोसाइटी विल नेवर कम टुगेदर, दे विल नेवर बी यूनाइटेड. They saw to it that there will be solid, always there will be constant conflicts with the religion, with the race, with the territory. So they adopted the policy called it divide and rule. दो जन को आपस में लड़ा दो तो लोग लड़ते रहेंगे और वो लोग आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपना राज्य चालू रखेंगे, इंडिया को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे. So due to the freedom struggle of 1857, Indians felt of giving a united fight against the British rule, and the freedom struggle of 1857 became an inspiration for Indian freedom movement. Okay, so this is once again I have revised the whole chapter with you. Okay, so this was a quick revision for the chapter. So thank you everybody, and please go through the questions and read the lesson again and find out the answers. Okay, answer the questions given at the back of your lesson. Okay, thank you.